So hey guys, welcome back to my channel English Guidener. My name is Gauri Sharma and I'm here with another topic. That is, if you want to speak English, then you have to do this. So now, you would be thinking that what am I talking about? I am talking about a one tip which will work like a sugar for you. Now you would be thinking that what is that tip? So if you want to know that tip, then please remain with me up to last. And first of all, I would like to say you all please have a look and like my video, share my channel, comment down and subscribe to my channel. So please comment your ideas on which topic you want videos, on grammar portion or any other thing. I will fulfill your demand. So let's move to our topic. So now, some people hesitate a lot to speak English. ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है that sometime you think that yes, I am good in English, I can speak, I can listen, I can read and I can write. But when you go in front of anyone, then you are like, now what that mean? So मतलब आप उस टाइम बिल्कुल ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी शाइनेस सामने आती है. आप पहले तो सोच के जाते हैं कि यार मुझे सब कुछ आता है, आई कैन कम्युनिकेट विद दैट पर्सन और आई कैन कन्वे माई थॉट्स टू दैट पर्सन, बट व्हेन यू गो फ्रंट ऑफ देम दैट you feel like dumb. So if you want that when you go in front of anyone and you want to speak English, then you have to do this tip. The person who is standing in front of you, he or she is only a human being like as you are. But the thing is that they don't have lack of confidence and you have that. So, आपको अपना confidence level बढ़ाना पड़ेगा. अगर हमें English आती है, but हम सामने जाके बोल नहीं पाते, अपने आप को represent नहीं कर पाते, तो उस English का कोई फायदा नहीं है. उसके लिए आपको confidence पे raise up करना पड़ेगा. तो वो कोई भूत नहीं है या ऐसा नहीं है कि उसने इंग्लिश जब वो पैदा हुआ तो कोई मिरेकल लेके आया था कि उसको इंग्लिश बोलनी आती है. उसने भी धीरे धीरे सीखी है. अगर आपसे कुछ गलत भी होता है, सो टू अर्थ इज द ह्यूमन. एक इंसान गलतियों का पुतला है. गलतियां होती हैं हमसे, बट उसको सुधारना हमारा हक है. और आपको अपने काम के लिए, आपको अपनी चीजों को सुधारने के लिए, स्किल्स को बढ़ाने के लिए, इनहांस करने के लिए, you have to do that work. So now, let's move further to our tip. What is that tip? So, अगर आप चाहते हैं कि in front of anyone you go, तो आप फिर से बेइज्जती महसूस ना करें, you should not feel insult yourself, then you have to do this tip. And first of all, make a courage and be a courage person. Just think in your mind that yes, I can achieve this goal, I can do this. As you all know that in this time, English is a kind of very important language and it really plays important role in everyone's life. But we just don't understand that how to enhance it. So you have to build your confidence. So let's move to our tip. So the tip is that set your goals. Now I will be explaining you that what that goals mean. Goals अपने set कैसे करने हैं. हम कोई भी इंसान विदाउट प्लानिंग और प्लॉटिंग के नहीं आगे बढ़ पाते हैं. जब तक हमारा गोल सेट नहीं होगा, हमारी लाइफ्स में भी जब हमें कुछ आगे बनना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले गोल्स रेडी करते हैं. सो इट इज ऑल्सो a language. You want to learn this. So for this also you have to make a goals. And what kind of goals you have to make, that is you just have to talk for 20 to 30 days as like कि बोलने की बातें होती है कि आप 10 दिन में सीख जाएंगे इंग्लिश ये वो, बट मैक्सिमम आपको 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन तो लगेगा ही. तो आप अपने मन में ठान लीजिए कि मैं इंग्लिश ही बोलूंगा, चाहे मैं जैसे भी बोलूं, गलत बोलूं, टूटी फूटी बोलूं, चाहे जैसे भी बोलूं. किसी के साथ भी, चाहे आपको कोई बाहर का स्ट्रेंजर भी मिलता है, उसके साथ भी इंग्लिश बोलिए. बट समटाइम यू फील लाइक दिस कि यार ये सोचो कि बड़ा इंग्लिश मारा और समथिंग लाइक दैट. ये हर किसी के मन में आता है सवाल, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आप पे कोई हंसेगा भी आपकी गलती पर, तो कल जब आप सक्सेसफुल होंगे, व्हेन यू विल बी एबल टू स्पीक अ गुड इंग्लिश,
then that person will like, oh my god, how good English he or she is speaking. जैसे कि हम किसी को देखते हैं ना तो कितना प्राउड फील होता है कि यार ये कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, काश हम इसके जैसे बोल पाते। तो आपको 30 डेज का चैलेंज ले लीजिए कि मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा। अपने फैमिली मेंबर्स को यू शुड टेल देम ऑल दैट मम्मा और पापा, आई हैव जस्ट टेकन वन चैलेंज दैट फॉर एटलीस्ट 1 month आई विल टॉक इन इंग्लिश। आपको वोकैबुलरी नहीं पता होती है, so sometime we hesitate to ask someone. So for that everyone has mobile phone, everyone has cell phones. तो वो एक टेक्नोलॉजी है जिसका हम सही से यूज नहीं करते हैं। तो आपको कोई वर्ड में आप अटक रहे हैं and something which you want to speak but you can't convey because your vocabulary is really weak, then you should go on Google and search there that what is that word meaning is. So फिर जब आपको उस चीज का मीनिंग पता लग जाएगा तो आप इंग्लिश बोलेंगे। एंड आई वुड सजेस्ट यू दैट यू शुड हैव अ स्मॉल डायरी ऑफ 10 to 20 रुपीज। उसमें आप अपने वर्ड्स जिनमें आप अटकते हैं, हम ये तो बोल देते हैं ना कि हम वोकैबुलरी लिखेंगे रोज के डिक्शनरी से इतने 20 वर्ड्स करेंगे, बट अगर आपको रियल में देखना है कि आपको कौन से वर्ड्स नहीं पता है तो आप जितना बोलेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप रीड करेंगे तो आपको इंग्लिश आएगी। नथिंग हैपन लाइक दैट। How much you will speak, you will come to know that how much your potential is in that, in which thing you are weak and in which thing you have built your strength. So for vocabulary, you should use technology and search word from that. And maybe you all have any one friend or any relative who must know English. And if you want to call them, so at least for half an hour, talk with them in English language, because how much you will talk, that much you are enhancing, that much you will enhance your English language. And if you don't have any relative or something, then please stand in front of mirror and just have one topic and read it out on that. और sometime like हमारे YouTube पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना, जैसे आइल्स में स्पीकिंग वाली होती है, तो वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप साथ साथ में उनको आंसर दीजिए। मतलब मन के अंदर सोचिए, इससे आपको पता लगे कि कैसे आप उस चीज़ का आंसर दे रहे हैं। एंड वन मोर ऐप इज देयर लाइक आर टेक्नोलॉजी। सो देयर इज वन ऐप विच इज कॉल्ड द Cambly. So you should download that app and learn English from that. In that there are really a good teachers who will help you out to speak English. They will also correct your vocabulary, your grammar, your everything in which you are weak at. So this was my tip, that take a challenge of 30 days that yes, I will just speak English, none other language. So it is really a very good tip. If you will do this for 1 month, you will really see a kind of change in you and you will feel that. आप मुझे खुद बोलेंगे कि हाँ, हमने जब ये चैलेंज लिया तो हम अपनी इंग्लिश को बढ़ा पाए। हमने काफ़ी ज़्यादा बोलते टाइम जो हमें वर्ड्स नहीं पता थे वो भी सीख लिए। कहाँ रोज़ के 20-20 वर्ड्स लेने थे, कहाँ जो हमें नहीं पता थे वो वर्ड्स सीख लिए। तो आपको ये चीज़ बहुत बेनिफिट करेगी and I am sure for that. So if you want to enhance this, then please apply this tip upon you. So I hope that you love this video, and one more time I would request you all that please like my video, share my channel, comment down and subscribe to my channel, and comment me that how much you like this video and how much this tip work for you. So thanks guys for watching my video.